बायोलॉजी दिल से। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर को। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने सेल डेफिनेशन, सेल डिस्कवरी, सेल मेम्ब्रेन, कैरेक्टर्स, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब डिस्कस किए। तो प्लीज आप वो सब वीडियो में जाइए, बात देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सेल वॉल, इट्स अ पार्ट्स ऑफ सेल। तो सेल वॉल इज अ पार्ट्स ऑफ सेल। तो उससे पहले हम लोग को जानना है, बिफोर दैट वी हैव टू नो द टाइप्स ऑफ सेल। एज वी नो, if the number of cell, if only one cell is present, so the organism is your unicellular. Example, amoeba, paramecium, euglena, chlamydomonas, these are the examples. If cell number more than one, many cells are there, so the organism is your multicellular, like some fungi, plants, animals, etc. मैंने क्या बोला? प्लांट्स, एनिमल्स। तो सेल में भी अब ये और एक टाइप हो गया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पर मैंने क्यों बोला कि अगेन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? एक्चुअली प्लांट सेल, एनिमल सेल सेम ही है, पर सम डिफरेंसेस आर देयर ड्यू टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द स्ट्रेटेजी ऑफ लिविंग। प्लांट सेल, एनिमल सेल कुछ हद तक डिफरेंट हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट structurally, means in cell structurally, the plant cell and animal cell are also different. So let's check. So here I draw animal cell and plant cell. Clear? So if you see animal cell, here in the animal cell only one boundary is there, सिर्फ एक ही बाउंड्री है। पर अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो here two boundaries are there. Outside one boundary, outside एक बाउंड्री है, and inside another boundary. तो ये outside boundary है क्या? This outside boundary is your cell wall. So in case of plant cell, apart from the cell membrane, apart from cell membrane, one more boundary is there, that is your cell wall. Clear? And this cell wall exclusively found in the plant cell. But not only plant cell, some other organisms like bacteria, fungi, they also have cell wall. Clear, student? So cell wall is the outermost covering in the plant cell, in fungi, in bacteria. But in case of animal cell, only one boundary is there, that is your cell membrane. Clear? Now next. Next thing is that non-living. Next one is your non-living. This is very important. First, presence only in plant cell. Cell wall present only in plant cell, and it is non-living. It is freely permeable. तो जो भी सामान है सब अलाउ कर देता है, तो सब अलाउ कर देता है। तो कुछ वैसा तो काम हो नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं। तो they provide a shape to the cell, प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल। इनसाइड में जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ऑब्वियसली आउटर कवरिंग है तो मेन काम वही होगा, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट ऑल्सो। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में
एक डिफरेंस, कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेल वॉल ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। अगर बहुत स्पेसिफाई बोलेंगे, प्लांट सेल, फंजाई एंड बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग या कुछ एनिमल्स को देख लो, जिराफ, पांडा, बफेलो, काउ, इन लोगों का जो सेल होगा मेनली एनिमल सेल, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। इन केस ऑफ प्लांट, द आउटर बाउंड्री इज योर cell wall. After that, cell membrane is present. Outer boundary is your cell wall. Next to cell wall, cell membrane is present. But in case of animal cell, only one boundary, that is your cell membrane. Cell wall non-living. जहाँ पे cell membrane क्या था? Living. Cell wall non-living, cell membrane living. Cell wall freely permeable, cell membrane selectively permeable. तो सेल वॉल सब कुछ अलाउ कर देता है, पर जहां पे सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टेड मटेरियल को ही अलाउ करता है, so that's why cell membrane selectively permeable membrane. Then both case cell wall, cell membrane दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. Yes, one more important thing. Cell wall made up of cellulose. Cell wall made up of cellulose. Cell membrane made up of lipid and protein. And one more thing, turgidity. Very important. ये जो cell wall है ये turgidity maintain करता है. ये turgidity होता क्या है? Suppose in previous video we discussed about the solution, hypotonic, hypertonic, isotonic. Hypotonic means solute less, solvent more. ऐसा एक solution जिसमें solute कम है और solvent ज्यादा है, तो क्या होगा? इंडोऑस्मोसिस, बाहर से पानी सेल के अंदर में जाएगा. पानी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सेल विल बर्स्ट. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, वेरी डाइल्यूट मीडियम. डाइल्यूट मीन्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन. मैंने डाइल्यूट क्यों बोला? इफ एनी सोल्यूशन वाटर इज मोर, दैट सोल्यूशन इज नोन एज योर dilute solution, means hypotonic solution. If we placed plant cell in the hypotonic solution, it will no burster, means there is a no change. इसमें कोई change नहीं होगा. It will not swell up, it will not burst. क्यों? Because of this property, turgidity, that is given by cell wall. So cell wall with a full force exert a pressure, and that pressure equalizes the water molecule entry, the pressure from the water, so that will equalize, neutralize. So as a result, there will be no change, and that phenomena is known as your turgidity. Turgidity means prevents the plant cell from bursting in very dilute medium. So हम लोग अगर plant cell को in hypotonic solution में डालेंगे, there will be no change because of cell wall. Why? Because cell wall provides turgidity. Plant cell can withstand in very dilute medium. Not only plant cell, bacteria, fungi also, because they also have cell wall. One more information. I told you in the plant, cellulose means the cell wall made up of cellulose. In case of bacteria,
The cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. याद रखिएगा. So in bacteria, cell wall is made up of peptidoglycan. And in case of fungi, it is made up of chitin. It is made up of chitin. Clear? So plant cell wall is made up of cellulose, but not only cellulose. अब higher class में जानेंगे हेमीसेल्युलोज, पेक्टिन, ये सब भी प्रेजेंट रहता है सेल वॉल में. बैक्टीरिया में सेल वॉल मेड अप ऑफ peptidoglycan, and in case of fungi the cell wall is made up of chitin. One more extra thing, that is plasmolysis. What is plasmolysis? क्या होता है plasmolysis? देखो, hypotonic solution, no change in plant cell. But if we placed plant cell in the hypertonic solution, क्या solution? Hypertonic solution, where solute is more, solvent is less. मतलब मेरा जो solution है वो concentrated. If we placed plant cell in hypertonic solution, whatever the material the inner contained along with the plasma membrane, that will move at one corner. ये सिकुड़ जाएगा inside due to the cell wall remain intact, but अंदर का जो content है that will shrink and move at corner. That kind of condition is known as plasmolysis. So keep in mind, in hypotonic solution there is a no change in plant cell due to cell wall, due to the cell wall provides turgidity. But in case of hypertonic solution, the content will move at one corner. That phenomena is known as plasmolysis. That phenomena is known as your plasmolysis. So one again, recap. Cell wall is a parts of cell. This cell wall exclusively found in the plant cell. Not only plant cell precisely if we say, it is also found in bacteria and fungi. It is non-living, fully permeable. Provide structural strength, means mechanical strength. It is made up of cellulose and it provides turgidity. So what is the differences between cell wall and cell membrane? Cell wall found in plant cell. Cell membrane found in plant cell as well as animal cell. Cell wall is the outermost boundary in case of plant cell. जहाँ पे in case of animal cell, there is no such boundary. Only one boundary, that is your cell membrane. Cell wall made up of cellulose. Cell membrane made up of lipid and protein. Cell wall fully permeable. Cell membrane selectively permeable. Cell wall provides shape, turgidity. Cell membrane also provides shape. Apart from that, is also allow the selected material in and out of the cell. Due to cell wall, very dilute media in the hypotonic solution, no change in the plant cell. If plant cell placed in the hypertonic solution, the cellular content along with the cell membrane move at one corner. That condition is known as your plasmolysis. Bacteria cell wall made up of peptidoglycan, and the fungi cell wall is made up of chitin. Plant cell wall is made up of cellulose. And one more two extra thing, that is your
Now question is that cell wall to rigid, tough. So how the interaction between the two cell takes place? How the interaction takes place? कैसे interaction होता है? Suppose this is a one cell, this is a one cell, cell wall, ठीक है? अब दोनों में इंटरेक्शन कैसे होगा? बिकॉज सेल वॉल इज वेरी हार्ड, रिजिड. एक्चुअली इन बिटवीन दिस टू सेल देयर इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इज देयर. क्या है प्रेजेंट? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इज प्रेजेंट दैट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम दिस सेल साइटोप्लाज्म टू दिस सेल साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो दोनों सेल है, प्लांट सेल है, सेल वॉल बहुत हार्ड है, तो हाउ द मटेरियल विल पास फ्रॉम वन साइटोप्लाज्म टू अनदर साइटोप्लाज्म? इन बिटवीन टू सेल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इज प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन. एक टनल बन जाता है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है दोनों सेल के बीच में. दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड और साइटोप्लाज्मिक टनल is known as your plasmodesmata. So in the cell wall there is a cytoplasmic tunnel or strand is present. Because of that is known as your plasmodesmata, and because of the plasmodesmata two cytoplasm of the cell can communicate with each other. Clear student? So this is all about your cell wall. Again, if you see the animal cell, outer boundary only cell membrane. Plant cell, the outer boundary is your cell wall. After cell wall, cell membrane is present. Animal cell, the cell membrane, if you see the cell membrane, that is selectively permeable membrane. Cell wall, fully permeable. If you see cell membrane, that is made up of lipid and protein, and if you see the cell wall, it is made up of cellulose. And the most important thing, the cell wall provide turgidity, means the plant cell can easily withstand in the very dilute medium, prevent from bursting, and that phenomena is your turgidity, that is provided by the cell wall. And in case of hypertonic solution, the cellular content will move at one corner. That phenomena is known as your plasmolysis. So this is all about your cell wall. Hope you like this video. Give a big thumbs up. Press the bell icon. Subscribe to our channel. Thank you. See you soon.